Yonami and Bushi. Yonami Chiru was the most admired girl in Okinawa. She was intelligent, tall, strong, big, and beautiful. And most important of all, she was so well trained in karate that no one could beat her. When it was time to get her married, her father, who was a rich merchant, began to worry. He loved his daughter and wanted her to be happy and well cared for. She was beautiful and she would inherit a fortune for him. But where, oh where, could he find a young man who would come forward to marry a woman who was stronger than him? Yunami had her own ideas about marriage. She declared firmly, I will only marry a man who can beat me in a fair fight. Admire का मतलब great respect, merchant, a trader who sells goods in large quantities. Inherit, receive, inherit, receive property or a title from someone when they die. Declare, announce openly or formally. मतलब योनामी ये जापान की कहानी है. योनामी चीरू was the most admired girl, मतलब वो greatly respected girl in Okinawa. वो intelligent थी, tall, strong, big and beautiful थी और वो बहुत अच्छे से ट्रेन थी कराटे में. और जब उसकी शादी करने का टाइम आया तो उसके फादर जो एक रिच मर्चेंट थे, मर्चेंट मतलब अ ट्रेडर हु सेल गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, वो मर्चेंट थे. उनको फिक्र होने लगी कि क्योंकि कौन ऐसी लड़की से शादी करेगा. देखो योनामी के जो फादर थे उनको फिक्र होने लगी कि कौन मेरी लड़की से शादी करेगा. और योनामी को एक बहुत एक अच्छा मेरे फॉर्चून मिलने वाला, मतलब उसको बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे शादी के बाद. But where, oh where, could he find a young man who would come forward to marry a woman who is stronger than him? कौन ऐसी लड़की से शादी करेगा जो लड़की उससे ज़्यादा ताकतवर है. योनामी ने ये डिक्लेयर कर दी थी फॉर्मली कि वो ऐसे उसी लड़के से शादी करेगी जो योनामी को एक फेयर फाइट में हराएगा. ओके. Surprisingly, many young men picked up the challenge and came forward to fight her. After all, she was a beautiful girl with a fortune. Many wrestlers were eager to win her in the contest of martial arts. One of the first to ask her for her hand was Kojo, who was actually bigger and stronger than Yonami. He was so tall and well built that his hands were like shovels and his legs resembled tree trunks. But he played foul, even as Yonami was bowing to him in a customary sign of respect to one's opponent. He threw a punch at her, breaking the rules of the game. Yonami was angry. She caught hold of his arm and twisted it so powerfully that the unsportive Kojo fell down in a heap and had to limp away defeated. Eager, strongly wanting to do or have. One of the first to ask for her hand was Kojo, who was actually bigger and stronger than Yonami. He was so tall and well built that his hands were like shovels and his legs resembled a tree trunk. But he played foul, even as Yonami was bowing to him in a customary sign of respect to one's opponent. He threw a punch at her, breaking the rules of the game. Yonami was angry. She caught hold of his arm and twisted it so powerfully that the unsportive Yojo fell down in a heap and had to limp away defeated. तो योनामी से शादी करने के लिए बहुत सारे लोग आगे आए और बहुत सारे रेसलर्स ईगर थे. ईगर का मतलब स्ट्रांगली वांटिंग टू डू और हैव. वो योनामी के साथ कॉन्टेस्ट जीतना चाहते थे और योनामी के साथ शादी करना चाहते थे. और सब जो पहले आए उनमें था खोजो योनामी से बड़ा था और स्ट्रॉन्गर भी था, टॉल था और उसके जो हैंड्स थे वो शॉवल जैसे. शॉवल मतलब अ टूल रिजेंबलिंग अ स्पेड फॉर मूविंग अर्थ, स्नो एटसेट्रा. एंड हिज लेग्स रिजेंबल्ड ट्री ट्रंक्स, मतलब इतना बड़ा था वो कि उसके जो हाथ थे वो शॉवल जैसे दिखते थे और उसके पैर ट्री ट्रंक के जैसे दिखते थे. बट ही प्लेड फाउल. और योनामी जब उसको बाव मतलब bend the head or upper body as a sign of respect in a customary sign. Customary मतलब usually फाइटिंग से पहले बाव करते हैं जापानीज में.
तो जब बाव करी तभी उसने एक पंच मार दिया उसको, और उसने गेम के रूल्स को तोड़ दिया। और योनामी को बहुत गुस्सा आया। योनामी ने कोजो का हाथ पकड़ी और उसको मोड़ दी, और कोजो गिर गया। कोजो फेल डाउन इन अ हीप एंड हैड टू लिम्प अवे डिफीटेड। हीप मतलब अ पाइल ऑफ सब्सटेंस और ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लिम्प वॉक विद डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ एन इंजर्ड लेग और फुट। कोजो हार गया। Many promising young wrestlers tried their hand, but Yonami defeated them all. Her father was in despair. Young men wanted to marry girls who could cook and wash and make tea for their husbands, who would marry a girl who enjoyed wrestling. Bushikiyo was just such a man. He had trained under the karate master Shakugawa. Sakugawa. He proved to be such an expert that he was recruited by Shoko, the king of Okinawa, to be his personal guard. His friends said to Bushi, "You should take on the challenge of this girl." His friends said to Bushi, "You should take on the challenge of this girl, Yonami. She may be big, but you are stronger and smarter than her." Bushi too was keen to marry a girl like Yonami. He did not want a delicate, fragile girl for a wife. "I shall fight with her and win over her," he decided. Despair का मतलब complete lack of hope. Recruit, take on someone to serve in the armed forces or work for an organization. Delegate या और fragile, इसका मतलब है easily broken और damaged. तो योनामी के फादर और ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि young men wanted to marry girls who could cook and wash and make tea for their husbands. Who would marry a girl who enjoyed wrestling? मतलब जो लड़के थे वो ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे जो खाना बना सकती है और साफ़ सफाई कर सकती है और चाय बना सकती है अपने हस्बैंड के लिए। और योनामी के फादर ये सोच रहे थे कि कौन ऐसी लड़की से शादी करेगा जिसको रेसलिंग पसंद है। बुशिकियो वॉज सच अ मैन। बुशिकियो कराटे मास्टर साकुगावा के अंदर ट्रेंड था, और वो शोको किंग ऑफ ओकिनावा था। शोको का पर्सनल गार्ड बनने के लिए उसको रिक्रूट किया गया था। रिक्रूट का मतलब टेक ऑन समवन टू सर्व इन द आर्म्ड फोर्सेस और वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब रिक्रूट करना, मतलब नाम देना। हिज फ्रेंड सेड टू बुशी के दोस्त ने उसको बोले कि यू शुड टेक ऑन द चैलेंज ऑफ दिस यंग गर्ल। योनामी का तुमको चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। शी मे बी बिग बट यू आर स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर देन हर। तुम उससे ज़्यादा ताकतवर और उससे ज़्यादा स्मार्ट हो। बुशी को भी ऐसी लड़की से शादी करनी, योनामी जैसी ही लड़की से शादी करने का था। उसको डेलिकेट और फ्रेजाइल लड़की नहीं चाहिए थी। तो बुशी ने सोचा मैं इससे फाइट करता हूँ और इससे शादी कर लेता हूँ। योनामी वॉज इम्प्रेस्ड एट द साइट ऑफ अ न्यू चैलेंजर. शी हैड हर्ड दैट ही वॉज वन ऑफ द किंग शोकोज पर्सनल वॉरियर्स. He was tall and slim. He stood firmly on his feet and seemed unshakable. Above all, he had dark, piercing eyes which looked straight at the opponent and showed that he was fearless and straightforward. मतलब योनामी भी इम्प्रेस हो गई, और योनामी ने सुनी थी कि किंग शोको का पर्सनल वॉरियर्स में से एक है, और बुशिकियो टॉल था, पतला था और एकदम टाइट खड़े रहता था. वो स्टूड फर्मली ऑन हिज फीट एंड सीम अनशेकेबल. ओके, अबव ऑल ही हैड डार्क पियर्सिंग आइज, मतलब वो सीधा अपोनेंट की आंखों में देखता था, और वो ये बताता था कि वो फियरलेस है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब वो डरता नहीं है किसी से भी, अपने अपोनेंट से डरता नहीं है वो. द रेसलिंग मैच बिगन. Yonami and Bushi bowed to each other and they began to attack each other in the earnest. They punched, kicked and twisted using their best techniques. It looked as if the match was going to be a tie. Nobody winning, nobody losing. At a crucial moment in the fight, Yonami paused. Ever so briefly, Bushi took advantage of the moment and brought her down with a swift punch. और मैच बिगिन हुआ और वो लोग पंच किक और ट्विस्ट करने लगे, और ऐसा लग रहा था कोई भी नहीं जीतेगा और कोई भी नहीं हारेगा. लेकिन एक क्रूशियल मोमेंट फाइट में योनामी रुक गई थोड़ी देर के लिए, और बुशी ने यही मौके का फ़ायदा उठाया और उसने एक स्विफ्ट पंच मारा योनामी को, और योनामी गिर गई. साइट मीन्स द एक्ट ऑफ सीइंग, पियर्सिंग, वेरी शार्प, कोल्ड और हाई पिच्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट एंड ओपन, क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट, द सक्सेस और फेलियर ऑफ समथिंग, पॉज्ड, स्टॉप टेम्पररीली. Yonami's father was a very happy man. Bushi and Yonami
were married in a splendid ceremony. It was a happy marriage. Yonami was kind and loving. She cooked and cleaned and kept the house spick and span. One day, when she was sweeping the kitchen, Bushi saw her lift a huge bag of rice with her left hand as she swept beneath the bag with her right hand. He grew thoughtful. Is she really so strong, and yet I brought her down with one punch? One day Yonami announced that she would like to visit her parents. I will leave in the evening and return the next day in time to cook your dinner, she said to her husband. Splendid, very impressive ceremony, a formal occasion celebrating an event. Sweep, clean by rushing away dirt or litter, beneath, extending or directly underneath. योनामी के फादर बहुत ही खुश हो गए योनामी की, क्योंकि बुशी से शादी हो गई और उन लोग दोनों की शादी स्प्लेंडेड सेरेमनी में हुई थी. स्प्लेंडेड मीन्स वेरी इंप्रेसिव सेरेमनी, अ फॉर्मल ओकेशन सेलिब्रेटिंग एन इवेंट. और वो एक हैप्पी मैरिज थी. योनामी कुक करती थी, साफ सफाई करती थी और घर को स्पिक एंड स्पैन रखती थी. स्पिक एंड स्पैन मीन्स नीट एंड क्लीन. एक दिन योनामी जब झाड़ू मार रही थी, स्वीप कर रही थी किचन में, तब उसने एक बड़ा बैग ऑफ राइस अपने लेफ्ट हैंड से उठाया और उसके नीचे स्वीप कर लिया, झाड़ू मार लिया. तब बुशी ये सोच रहा था कि इतनी स्ट्रांग है ये, फिर भी एक पंच से बुशी ने उसको हरा दिया. और एक दिन योनामी ने बुशी को बोली कि मुझे मेरे पेरेंट्स के घर पे जाना है और मैं अगले दिन लौट आऊँगी और तुम्हारे लिए डिनर बना दूँगी. You really should not travel during the night, Bushi said to her firmly. There are bandits about, and it is just not safe for a woman to go out alone after it is dark. My dear husband, you forget that you are married to you married a trained wrestler, Yonami said to him with a smile. Don't forget that I threw you down flat on the ground, said Bushi. You are not unbeatable. Don't worry, said Yonami. Bandits are not as skilled as you. I can take care of myself. Bushi was not pleased. She is overconfident, he thought to himself. She must be taught a lesson for her own good. Bandit मतलब a member of the gang of armed robbers. मतलब गुंडे बदमाश का एक झुंड. Pleased, feeling or showing pleasure and satisfaction. Taught is past of teach. मतलब एक दिन योनामी ने बोली मुझे मेरे पेरेंट्स के घर पे जाना है इवनिंग में और मैं अगले दिन लौटूंगी और तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगी. तो बुशी ने बोला कि तुमको अकेले रात को बाहर नहीं घूमना चाहिए, यहाँ पे बैंडिट्स होंगे, मतलब आर्म्ड रॉबर्स होंगे, तो वो तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है. फिर योनामी ने बोली कि मैं एक ट्रेन्ड रेसलर हूँ. और फिर बुशी ने बोला कि मैंने तुमको एक पंच से गिरा दिया था. तो योनामी ने बोली कि बैंडिट्स आर नॉट एज स्किल्ड एज यू. बैंडिट तुम्हारे जितने स्किल्ड नहीं होंगे, मैं मेरा ख्याल रख सकती हूँ. तो बुशी ने बोला कि बुशी ने ये सोचा कि ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा. दैट इवनिंग योनामी लेफ्ट टू वॉक टू हर फादर्स होम. एज सून एज शी डिपार्टेड, बुशी डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ बैंडिट, वेयरिंग शैबी क्लोथ्स, smearing dark colors over his hands and covering his face with a scarf. He ran as fast as he could to hide behind a clump of trees at a fork on the road. Darkness fell and he saw Yonami approaching the fork from where she will take a left turn to reach her father's house. When she crossed the clump of trees, she jumped out from behind the trees and tried to attack her. मतलब बुशी एक बैंडिट के जैसा डिस्गाइज्ड हो गया और उसने शैबी कपड़े पहने, मतलब कि बहुत ही डर्टी क्लोथ्स पहने उसने, और स्मियरिंग डार्क कलर्स, और अपने फेस पे डार्क कलर्स लगा दिया ताकि कोई उसको पहचान नहीं सके, और अपना फेस को कवर कर लिया एक स्कार्फ से. और वो बहुत तेज़ भागा और क्लम्प ऑफ ट्रीज़ के पीछे छुप गया. क्लम्प मतलब क्लस्टर और फॉक मतलब अ पॉइंट वेयर द रोड एटसेट्रा डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. डिस्गाइज देखो मीनिंग्स हम लोग देख लेते हैं. डिपार्ट, लीव, डिस्गाइज, चेंज इन अपीयरेंस और नेचर टू प्रिवेंट रिकॉग्निशन. क्लम्प, क्लस्टर, फॉक, अ पॉइंट वेयर द रोड एटसेट्रा डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. फिर बुशी एक बैंडिट बन के छुप गया झाड़ियों के पीछे, फॉक पे झाड़ियों के पीछे छुप गया. और फिर वहाँ पे योनामी आई और जैसे ही उसने क्रॉस करी
ट्रीज को क्रॉस करी, बुशी ने उस पर अटैक कर दिया. Yonami was swift and sharp in her reaction to the attack. She held the attacker by her hand and kicked him with such a force that the attacker fell to the ground unconscious. Yonami dragged him and tied him to a tree with her sash. She adjusted her backpack and set off around the corner for her father's home. The next day, as she was returning home in the afternoon, she saw her bandit still tied to the tree as she had left him the previous night. Shall I untie you now or leave you here? She asked him. Please untie me, mumbled the bandit. I beg you to forgive me. I shan't ever do this again. Swiftly she untied him and walked away quickly. She was in a hurry. She had to reach home in time to cook her husband's evening meal. Little did she realize that she just released her husband from captivity. Meanings: sash, strip of cloth worn over one shoulder or around the waist. Drag, pull along with effect. Mumble, indistinct speech, shan't, shall not. Smear, coat or mark with a greasy or sticky substance. Captive, a person who is held prisoner. ओके, तो योनामी बहुत स्विफ्ट थी. योनामी ने उसको गिरा दी, एक किक करके उसको गिरा दी और उसको बांध दी अपने स्टैश से, और फिर वो अपने फादर के घर पे चली गई. फिर अगले दिन जब वो वापस आ रही थी आफ्टरनून में, तो उसने देखी कि वो बैंडिट अभी तक ट्री से बंधा हुआ है. फिर उसने पूछी उसको, शैल आई अनटाई यू नाउ और लीव यू हियर, और बैंडिट ने मम्बल किया कि प्लीज़ मेरे को छोड़ दो. आई बेग यू टू फॉरगिव मी, आई शांट एवर डू दिस अगेन. और फिर उसने बैंडिट को अनटाई करी और वहाँ से वो निकल गई, क्योंकि उसको उसके हस्बैंड के लिए इवनिंग मील बनाना था. और उसने ये रियलाइज़ नहीं करी कि उसने उसके खुद के हस्बैंड को ही कैप्टिविटी से रिलीज़ कर दिया. दैट इवनिंग, quite a while after she had set the dinner ready, she walked in looking tired and dull. She helped him wash and set out fresh clothes for him to wear. She invited him to have a hot meal. As Bushi sat down to dinner, he brought out a white sash from his pocket and gave it to his wife. This is yours, if I am not mistaken, he said, looking into her eyes. Oh Bushi, was it you? I am so sorry, exclaimed Yonami. You don't have to be sorry, said Bushi. You taught me a lesson that I won't forget all my life. And that is, don't underestimate anybody, not even a woman, asked Yonami playfully. Especially not a woman, said Bushi. And they burst out laughing together. Meaning brought, past of bring. Exclaim, cry out suddenly. मतलब बुशी घर पे आया और बुशी बहुत ही थका हारा लग रहा था, और योनामी ने उसको फ्रेश कपड़े दिए पहनने के लिए. फ्रेश कपड़े मतलब निकाले उसके लिए, और उसने योनामी ने उसको खाने के लिए बुला लिया. और फिर बुशी ने योनामी को वाइट सैश दिया अपनी पॉकेट में से निकाल के. फिर योनामी समझ गई कि वो जो बैंडिट था वो बुशी ही था. फिर उसने सॉरी बोली, योनामी ने उसको सॉरी बोली, और बुशी ने बोला, यू डोंट हैव टू बी सॉरी, यू टॉट मी अ लेसन दैट आई वोंट फॉरगेट ऑल माई लाइफ, एंड दैट इज़ डोंट अंडर एस्टिमेट एनीबडी. मतलब उनको किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कम नहीं समझना चाहिए. नॉट इवन अ वुमेन, आस्क्ड योनामी playfully. Especially not a woman, said Bushi, and they burst out laughing together. मतलब हमको किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, स्पेशली अ वुमेन. ओके, read the story and write about the following in short. Yonami Chiru of Okinawa. Yonami Chiru was the most admired girl in Okinawa. She was intelligent, tall, strong, and big and beautiful, and most important of all, she was so well trained in karate that no one could beat her. Kojo was one of the first to ask for Yonami's hand. He was actually bigger and stronger than Yonami. He was so tall and well built that his hands were like shoals and his legs resembled tree trunks. But he played foul, even as Yonami was bowing to him in the customary sign of respect to one's opponent. He threw a punch at her, breaking the rules of the game. Yonami was angry. She caught hold of his arm and twisted it so powerfully that the unsportive Kojo fell down in a heap and had to limp away defeated. Bushikiyo had trained under the karate master Sakugawa. He proved to be such an expert that he was recruited by Shoko, the king of Okinawa, to be his personal guard.
He did not want a delicate, fragile girl for a wife. Discuss and write one to two lines about the following. Yonami's idea about marriage. Yonami had her own ideas about marriage. She declared firmly, I will only marry a man who can beat me in a fair fight. How Bushi defeated Yonami in a wrestling match. At a crucial moment in the fight, Yonami paused ever so briefly. Bushi took advantage of the moment and brought her down with a swift punch. Why Bushi told Yonami not to travel at night? Bushi told Yonami not to travel at night because there were bandits and it was not safe for women to go out alone in the dark. Yonami fight with Bushi disguised as a bandit. When Yonami crossed the clump of trees, अभी Yonami आएगा, she नहीं आएगा. When Yonami crossed the clump of trees, Bushi jumped out from behind the trees and tried to attack her. Yonami was swift and sharp in her reaction to the attack. She held the attacker by her hand and kicked him with such force that the attacker fell to the ground unconscious. Yonami dragged him and tied him to a tree with her sash. She adjusted her backpack and set off round the corner for her father's home. The lesson that Bushi learned. Bushi learned a lesson that we should not underestimate anybody, not even a woman. Divide the story into different sections to show the different events and time period in it. Give suitable titles to each section. Example, finding a suitable man for Yonami. Gojo comes forward and is defeated. Bushi wins fight and Yonami and they are married. Bushi wins fight with Yonami and they are married. Bushi disguised as a bandit and is defeated. Bushi learned a lesson. Write short monologue using the following ideas. Write down monologue and present it in the class. Yonami's father worrying about getting her married. I love my daughter and I want her to be happy and well cared for. She is very good in karate. Who would marry a man who is stronger than him? यहाँ पे बहुत एक लाइन ऐड कर सकते हो. Young men want to marry girls who can clean and cook and make tea for their husband. Who would marry a girl who loves wrestling? ये वाली लाइन भी आप ऐड कर सकते हो. Bushi disguised as a bandit. She is overconfident. She must be taught a lesson for her own good. I will disguise as a bandit and attack her. In this way, she will learn a lesson. Okay, thank you.